वही लिंक है ना? हाँ सेम। यादवानंद जी कैमरा करो यार जो करना। ये आप प्रिंसिपल सर का खोल लेंगे, जाइए खोलिए कंप्यूटर पे पासवर्ड तो नहीं डालना ना। यार माइक ऑन करेंगे तो बोलने लगेगा। हाँ दोनों है ना, इसका भी थोड़ा इसका बंद है कोई नहीं। चालू करें। इसका वो साउंड कम कर दे रहा हूँ मोबाइल का। Am I audible? बुद्धसेन जी आवाज आ रही क्या? बुद्धसेन जी आवाज आ रही क्या? नहीं सुनाई दे रहा यार, क्या कर दी? अभी कुछ ही क्षणों में ये दूसरा सेशन चालू होगा। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर यादवानंद नियोग जुड़ चुके हैं। यादव सर, am I audible? Hi. Yes, you are audible. Okay, thank you. All is going good. Nothing problem. So, the principal sir of our institution is joining now, and we will start this session, and we are welcoming all the participants and the guest speaker of this session, Professor Yadvanand Niyog from BITS Pilani. So I would like to call Principal Sir for his inaugural speech for this session. Sir, over to you. Okay. Thank you, co-coordinator Amit Jhaji, and convener of the webinar, Dr. R.K. Jhaji, member of the department, faculty member, Professor Mahel Pratap Singh ji, other faculty members. I'm looking Yadvananda Yogji. I welcome to you, sir, in my college webinar
the Prime Minister Excellence College, and our government has decided to take this type of the webinars in various colleges. That way, the students and the faculty members to develop their knowledge and increase their knowledge and give the society some new things. Because of that, they have chosen this Indian economy in the digital era. As we all know that in digital era, the Corona call period, we used much more, and now we all familiar with this, and other aspects of and dimensions also involved in this way. And we also know that in the year of 2014, it was about 5.4% of digital economy in India, and then after in 2019 it has become 8.5%, and increase that shows 15.6 in the 14 to 19. But now at moment it is much more. We have going with this, and we use much, and I with this webinar our faculty members and students and some other departments members will be benefited with your lecture, and I welcome to once again in this webinar from my heart, from my college, Prime Minister College of Excellence, Government WAIDHAN, Singrauli, Madhya Pradesh. Thank you, sir. Thank There will be some master's students as well in the presentation. So I am keeping my presentation is very simple. Amit, how much time that I have for my presentation? Sir, I think it's 1 hour. Okay, 1 hour. Fine. I may not take 1 hour, but maybe 30 minutes or so. Let me first share my slide. Just a second. Now I guess visible. Amit, my presentation is visible to you. Oh, presentable. Yes, yes, yes. Now you are visual. Okay. Okay, fine. Yeah, thank you. The topic of presentation is all about digitalization and economic growth slash development in India. Why I'm putting growth and development? Because development, as you all know, all we know, that development is a very broader concept. And within this limited time space, I may not be able to cover every aspect of development, economic development of India. So basically, my presentation will be mostly about economic growth, how digitalization has a theoretical linkage with the economic growth, and what is the empirical literature that we have, which establishes this kind of relationship, and what is the status of digitalization in India, and what about the future prospect of digitalization. And we all know, after the economic reform of 1991, this concept of digitization, and profoundly the economic growth, debate of economic growth is very prominent in policy debate and in empirical literature. And economists like Neeraj Hatekar, Wallet, they have the argument that okay, economic growth, especially in India, has been rapidly increasing after the economic reform of 1991. Along with the economic reform, as we all know, our economic become more open economy, right? Our trade share in GDP has increased tremendously. And within the trade, the international trade theories also say that with the trade, the foreign direct investment also brings about technology, right? Technical know-how, and which can be helpful in enhancing more economic growth.
right? And the development economic perspective, if you know the trickle down effect and trickle down theories, that okay, if economic growth will happen, economic development will follow it, right? But in that statement, in that argument, one of the vital factor that we need to considering about the distribution aspect, that how growth has been distributed among the population of the nation. And as we all know, the status of wealth and income inequality in India is very, very, significant. It has to be, the distribution is very, very wide. So now the questions may arise: how digitalization has an impact on economic growth, right? And in the recent government has adopted very much new policies, like digital, India approach, make in India approach. Then you have the emergence of a unified payment system. Now, among these factors, among these policies, how Indian economy is performing. So my presentation will be basically on two aspects. One is the theoretical aspect, and another was the empirical aspect. So to begin with, in first we need to understand the definitional prospect of digitalization, because in generally we use two terms, digitization and digitalization, whether both are same or whether both are different. Then comes our concern matter is about digital economy, Indian digital economy. So I just put a very simple example, for it might be helpful for the students to understand better about the definition of digitization and digitalization. So digitization, suppose the library books have been scanned, right, and made available online. So it becomes digitization. Okay, that information you are converted from offline mode to an online mode. So that become a digitization. But when the data has been collected across college, university, proceed using some advanced digital technologies, okay, digital technologies, which might be helpful in changing the structural parameter of teaching and learning, then it can be said as a digitalization. So there is a very significant difference in between digitization and digitalization. Now, which one is important? Right? Which one is important if we are considering the economic perspective of it? Both are important, but we need to pay more focus on digitalization. Why it is so? Because it has a combination of structural changes that are happening, and structural changes might affect your economic performance or economic development per se. Right? Now, after understanding this concept, let me bring to the next slide about the digital economy. Now, what is digital economy? According to the Asian Development Bank, the definition of Asian Development Bank, the digital economy refers to a broad range of economic activities that use digital information, okay, and knowledge as a key factor of production. So, as we all know, as a student of economics, the concept of factor of production, right? So, factor of production, the factor input will leads to output, right? So, when we are referring to digital economy, it means, according to the Asian Development Bank, that we are utilizing digitized information and digitized knowledge to produce output. Okay, then we can say it's a kind of a digital economy per se. Now, the digital economy is an economic activity that results from billions of everyday online businesses, devices, data, or processes. This is the definition by Deloitte. From these two definitions, what we have observed that, okay, if we are using that transactions, because no, economic activity needs economic transaction, right? To have an economic activity, you need economic transaction. If economic transaction is happening through online mode or any kind of online platform which involves lot of data sharing, lot of data storage, then we can consider that kind of economy as a digital economy. So if we are considering the Indian example, you heard this term UPI,
right? Unified payment system, e-commerce like Flipkart, Amazon, right? Fintech services like TCS and all. Then e-governance, a very recent that comes to the student mind or maybe policymaker mind is about the e-governance, right? Electronic governance. Now we I know that the present government is saying, always saying that we want minimum government and maximum governance. So in that scenario, when you are try to maximize governance, you need to have e-governance, electronic governance, right? Which does not require that kind of manpower to involve in the governance proceeding. Okay, I think it is now clear the definitional distinguishes between digitalization, and digital economy. Okay, uh, now coming to the next slide. Okay, so we all know Adam Smith, right? And he talks about the absolute advantages among the countries, international trade theory on international economic matter. So if you have some kind of absolute advantages, so you can have a advantages over the trade, right? And you can gain more income, more wealth of a nation. So, in the purview of comparative advantage or absolute advantages, now digitalization play a very vital role, because if we have that kind of digital technology, as such, you can gather more advantages as compared to the other nations. And it is very much prominent when we are considering the production side of the economy, right? So, as principals have already mentioned, the size of digital economy in India and its pace of growing in India, in a recent time. I just quoting one data from Hawaiian Export Economics, which estimated digital economy worth was US $11 trillion, and which contributing 15.5% of the global GDP in 2016, and they are estimated that it will grow up to $23 million, which will contribute 24.3% of the global GDP. So that is the size of the digital economy that we have. So it's worth discussing the matter of digital economy, and especially with respect to India, because Indian economy is also converted into a very significant digital economy if we are comparing with the other Asian nations. So it's very important to discuss the role of digitalization in economic growth progress or economic development progress. Now, okay, Amit, another thing, like I'm presenting in English. Should I use Hindi also for better understanding, or is it okay to go ahead with the English? It's okay, but it will be good of if you mix the both language. ओके फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं मिक्स लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन दूं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ताकि जो स्टूडेंट्स है उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो। गलती होगा तो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन हिंदी, बट एनीवे। So, अगर if we are considering the UPI, because UPI आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, right? And we are all using any form of unified payment system, GPay हो, PhonePe हो, etc. etc. Recent NIC का डाटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 का डाटा बताता है कि 2022 में there is a transaction of 1 to 5.95 trillion Indian rupees, and it has witnessed 1.75 times annual growth, year to year growth, if we are considering 2021. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, राइट? एंड ये यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो इंडिया की जीडीपी का 86% है। अगर नंबर्स की कंपैरिजन करें, इट इज कमिंग अप टू 86%। और इस ग्रोथ के पीछे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कोविड-19, राइट? आफ्टर कोविड-19 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ये there is a study, not a study, there are few studies जो बताता है कि जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंडिया में आया है, ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया है, राइट?
रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट वी हैव, ये बहुत ही मोबिलाइज किया है रिसोर्सेज को अक्रॉस इंडिया। ICAER का एक रिसेंट रिसर्च है जिन्होंने सिप्स इंडेक्स डेवलप किया है। सिप्स मींस कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट एंड सस्टेन। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द मेथोलॉजी, मैं मेथोलॉजी पे नहीं जाता हूं, नहीं तो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। बट जस्ट टू गिव ए रेफरेंस कि जो डिजिटाइजेशन का पैरामीटर्स है उसमें इंडिया इज बिकमिंग थर्ड largest digitized economy across the globe after US, China. India is ranking third in case in the size of digitalization, a digitized economy or digital economy. But यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे the score differences, रैंक में तो 3 है, that is fine, but score difference की अगर बात करें, US, चाइना हम लोगों से काफी ज्यादा आगे है, right? They are scoring 65, 62 और इंडिया का जो स्कोर है that is 39. If we are comparing with the other developed nations or Asian nation, India is performing well, but अगर developed nations US, China की comparison में देखें, तो इंडिया काफी अभी भी पीछे है in case of digitalization. इसके और कुछ पहलू है जो आने वाले स्लाइड में I will try to discuss. अगर इंडियन स्टेट की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें लार्ज स्टेट में, तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये 3 स्टेट है जहां पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड वी आर कंसीडरिंग द लार्ज स्टेट. ओके, नाउ theoretical questions that might come. One second, sorry. A theoretical question, a theoretical question that might come to your mind कि डिजिटलाइजेशन कैसे ग्रोथ से रिलेट होगा. क्या यूनिफाइड पेमेंट, हम लोग पेमेंट ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा, या हम लोग कुछ ऑनलाइन ऐप यूज कर रहे हैं लाइक फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, मिंत्रा यूज कर रहे हैं, क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा. तो थ्योरी हम लोग का क्या कहता है और इसका लिंकेजेस क्या है, व्हाट आर द लिंकेजेस थ्रू व्हिच डिजिटाइजेशन कैन इंपैक्ट योर इकोनॉमिक ग्रोथ. आई विल कम टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ लेटर स्लाइड. नाउ just be with me in the discussion of economic growth. So economic growth, as we all know, हम लोग जीडीपी से मेजर करते हैं और पर कैपिटा जीडीपी से मेजर करते हैं, और जीडीपी को इम्पैक्ट करने का एक वन ऑफ द चैनल इज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, that if digitization improving your productivity, that might impact your GDP positively. अगर कैपिटल लेबर का प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा with the use of digitalization, then it might have a positive impact on economic growth. लेकिन जब डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो two burning topic that comes to your mind or in policy debate, one is the economic growth, another is the employment. Employment का क्या होगा, right? अगर फ्लिपकार्ट ने मार्केट ले लिया, हम लोग अगर सारा सामान फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो बाजार में जो रिटेल शॉप्स है और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, है ना? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल है. अगर हम लोग, बिकॉज डिजिटलाइजेशन इज ए ग्लोबल फेनोमेना, आप उससे भाग नहीं सकते, राइट? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन. बट द थिंग इज दैट डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, जहां पे स्किल डिफरेंस इज अ वेरी मेजर थिंग, ओके, हाई स्किल एंड लो स्किल लेबर्स. तो इस स्किल डिफरेंस का बात अगर करेंगे तो डिजिटलाइजेशन इन दोनों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेगा. Because digitalization means you need a certain skill, you need a certain handle the data, to analyze the data, right? To analyze the information, to use the information, and that requires a certain level of skill level. अगर वो skill level है, then you can get a job or you can enhance your own productivity. But अगर हम इंडियन इकोनॉमी के जो लोअर सेगमेंट है, जो लार्ज लेबर्स एग्जिस्ट करता है, that is low skill laborers, right? Casual labor. Or another thing is the informal economy, the size of informal economy that we have. उन लेबर्स के ऊपर डिजिटलाइजेशन का क्या इफेक्ट आ सकता है, that has to be discussed, that need to be do certain kind of research on it. Then economic growth may be positively influenced होगा if you are considering the productivity aspect. Employment positively impact हो सकता है, negatively भी impact हो सकता है. We have a both hypothesis open. ठीक है. Income and wealth inequality. Then
अगेन द क्वेश्चन माइट कम कि वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी में डिजिटलाइजेशन का क्या रोल होगा, है ना? Because if the rich, the high skill laborers are getting jobs, or the productivity of high skill laborers has been improved through digitalization, then they will get more money, they will get more wages, they will get more income. But if we are considering the lower level of strata of laborers, they will lose jobs, right? Or they might not get that much of wages or income as if we are comparing with the higher end laborers, higher skill and laborers. Then definitely there will be significant differences in it between the income or wages earned by the high skill labor and low skill labor. Another thing, another important thing जो हो सकता है, that is the digital inequality. Okay, income wealth inequality के बारे में हम लोग जानते हैं. Another thing is in a recent time is very popular about the digital inequality. एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपके पास मोबाइल है, राइट? इन जनरली हम लोग डिजिटलाइजेशन के कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे मोबाइल यूजेस बाय पीपल. आपके पास मोबाइल है, बट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग विद दैट मोबाइल, राइट? अपने फोन कॉल किया, आपने व्हाट्सएप यूज किया, आपने इंस्टाग्राम यूज किया, डज इट हैव एनी प्रोडक्टिविटी इफ यू आर कंसीडरिंग द इकोनॉमी एज ए होल, राइट? Maybe no, maybe yes, right? Why? Because if we are using more Instagram, more WhatsApp, the companies will get rich, right? The employment of those companies will get higher and higher. But agar macroeconomic या microeconomic prospect से देखें, that what will be the productivity of using that mobile? Second thing, the financial literacy is another important challenge for the India, right? Financial illiteracy बहुत ज़्यादा है across India. They don't know how to use those financial और ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज होता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता. तो जो डिजिटल इनइक्वालिटी होगा उस पे हम लोग कैसे चर्चा करें, राइट? व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज और व्हाट कुड बी द consequences of digitalization when we are considering about the digital inequality. तो इन चार एस्पेक्ट को हमको देखना बहुत जरूरी है जब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट. नाउ for just understanding, I'm just using Solo's growth model. I guess most of the people have an idea about the Solo growth model, which is nothing but a Q. Your output is a function, affected by your technology and capital labor, function of capital labor. अगर इस सोलो ग्रोथ मॉडल को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिजिटलाइजेशन की कॉन्सेप्ट को लाते हैं, then digitalization can influence your economic growth, that is Q, your output, GDP, right? Through your productivity and efficiency, है ना? क्योंकि you will be using more data, more information, which might make you more productive. And it is not only true for the labor, it also true for the capital, right? And capital also, because you are using large amount of data, and nowadays big data is a very known concept to everyone. You are using those data to make decision about your firm, about your household, maybe in a micro level, right? Now, how do we estimate the digitalization? क्या indicators है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि एक कंट्री में डिजिटलाइजेशन कितना है ना? तो इन जनरली आप लोग एम्पेरिकल लिटरेचर को अगर देखेंगे तो पीपल आर यूजिंग आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एज ए पैरामीटर ऑफ डिजिटलाइजेशन. और ये पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं और ये इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं? इन जनरली जैसे इंटरनेट यूजर्स, टेलीफोन यूजर्स, है ना, सेल फोन यूजर्स, इसके थ्रू हम लोग एक एस्टिमेट करते हैं कि ओके, दिस इज द लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन India or maybe some other country. Now, is efficiency or productivity enhanced होगा, उसका इफेक्ट ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी में क्या पड़ेगा? मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करने में डिजिटलाइजेशन विल प्ले ए वेरी मेजर रोल. व्हाई? डिमांड पैटर्न, चेंजिंग डिमांड पैटर्न. अभी के nowadays the demand pattern change in every season, right? And if you are going to a shopping mall, आप लोग वहां पे देखेंगे a new collection, arrival of new collection, because that company has already analyzed the data, analyzed the different parameter. Then okay, आने वाले सीजन में लोग क्या पसंद करेंगे पहनना, कौन सा स्टाइल, कौन सा डिजाइन चलेगा.
taste and preferences in economics we regard it as a other factor that influence your demand, taste and preferences. But nowadays, with the use of data, the companies are analyzing that what could be your taste preferences, what could be the changes in your taste preferences, right? हम लोग सब जानते हैं, जब हम लोग गूगल यूज करते हैं, अगर कोई एक प्रोडक्ट हम लोग सर्च करते हैं, उसके बाद कोई भी अदर पेज खोलेंगे तो वो लोग एडवर्टाइज करेंगे, यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट, यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट, बिकॉज द एल्गोरिथम इज लाइक दैट. हम लोग जब यूज कर रहे हैं, वो उस मेमोरी, उस रिसर्च का मेमोरी और डाटा, दे आर people who are sitting, who are analyzing your data day and night to get an idea that what kind of taste and preference that you have, आपको क्या पसंद है, right? Then seasonal variation we all know in economics or in especially in time series that okay, there is a seasonal variation might be there, season by season कुछ changes होता है, right? जैसे दिवाली के टाइम में there will be more demand for crackers, होली के टाइम there will be more demand for rangoli and all. But ठीक है, that is traditionally true, but now it is what company adopting certain kind of strategies in that seasonal also, they are coming up with some other aspect, like हम लोग ऐसे रंगोली आपको सेल कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल ज्यादा फ्रेंडली है, right? So these are the strategies there people are using, the firm are using to capture the market, capture the economy, right? Now from these two slides, I think a little bit it is clear that okay, digitization has a role to play in economic growth, I guess so. If you have any queries, that please ask me, right? Now next, moving to the next slide, digitization impact at a macro level and a micro level. Micro level that I already said, individual firm के level पे digitization कैसे impact करता है. Macro level, if you are considering the macro level पे भी digitalization has a very very significant role to play, like government policies and e-governance, right? As I already mentioned, e-governance is becoming very very important for the government of India. Now ICT can significantly improve the quality of government. For now, मैं assume कर रहा हूँ कि ICT infrastructure can be regarded as parameter or parameter of digitalization. It is very helpful in improving the quality of governance, which will be helpful for the common people. आज के डेट पे, if you are having a mobile, आपके पास मोबाइल है, गांव में बैठ के you can analyze the whole data of your पंचायत, राइट? पंचायत में कितने फंड रिलीज हुए, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, राइट? It is only because that you have internet facility, you have a mobile, and you have a proper knowledge or information that okay, through this website we can get the data for my panchayat budget. लेकिन उसी पे अगर आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास मोबाइल भी है, बट आपको पता नहीं है, you don't have that information, you don't have that knowledge how to get the data for the panchayat budget, then you cannot use it for monitoring the government, local government, right? So इसीलिए हम लोग बार बार emphasize कर रहे हैं कि digital infrastructure is not a matter, the knowledge is also very significant when we are considering the overall economic progression. ठीक है? अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि ओके, व्हाट विल बी द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, एज आई ऑलरेडी मेंशन, इट मे वर्क्स इन अ बोथ वे, ये दोनों दिशा में काम कर सकते हैं. जैसे हाई स्किल सेक्टर में होगा क्या, they will get better jobs if they have skill, and with the enhancement of the productivity they will get the higher payments. But अगर lower skill sector की बात करें तो ये हो सकता है कि they might lose their jobs or they will get very minimum wages if we are considering the low sector economy. Now I'm just putting a brief picture about digitalization in the purview of ICT infrastructure or Indian per capita GDP. This is per capita GDP, right? So there, we all can see after economic reform there is a huge jump in the per capita GDP, and if you can see there is a dip down in the per capita GDP, right? And it is only because of your COVID-19, right? COVID-19 के वजह से ये dip down आया था 2020, but then again Indian economy is recovering. Now जो prominent empirical literature है, वहां पे जो ICT infrastructure का जो
इंडिकेटर्स है या प्रॉक्सीज है, मैंने 2-3 इंडिकेटर को लेके इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश किया, दैट व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ डिजिटलाइजेशन और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एक है फिक्स टेलीफोन सब्सक्राइबर पर 100 पीपल, ये सारे डाटा वर्ल्ड बैंक में अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया फ्रॉम 1960 एंड in 70s 80s onwards there is a huge jump in the telephone subscriber, right? Then there is a sudden fall in the telephone subscriber. Can anyone tell me why it is so? अगर इसको हम लोग अगर डिजिटलाइजेशन का एक पैरामीटर मान रहे हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? There is a less digitalization in India or less ICT infrastructural development in India. Can you explain? किसी को कोई ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? Anyone? Students are there, Abhi, now? Yes, students are there, but on YouTube, I can see a comment Okay. From Anuradha. Yeah, because landline is outdated now, so the shift is yes, inverted U. very. Yes. This is the answer. Yes. Yeah, very true. Yes, that is what. Now we are shifting to cell phone, right? People are, rarely use this, landline connections. The WLL connection is in nowadays. So you can see there is a significant fall. Yes, slide और एक important implications लेके आया है. There is a very important implications, especially for the students और early career researcher. that जो research होता है और research के जो variables होता है, that is very much context and time specific. अगर ये 90s का लिटरेचर होता है, रिसर्च होता है, अर्ली 2000 का रिसर्च होता है, देन इट इज ऑलराइट. ये एक इंडिकेटर, प्रॉपर इंडिकेटर हो सकता था हम लोगों का डिजिटलाइजेशन के लिए. बट ये सेम इंडिकेटर हमने कोई ओल्ड पेपर पढ़ा और आज के रिसर्च में यूज किया तो ये बहुत ही गलत रिजल्ट हम लोग को शो करेगा, राइट? सो मैं जानबूझ के इस स्लाइड्स को रखा टू गेट गिव यू एन आइडिया that when you are doing some research, it is very important to understand the variable, the indicator. ये बहुत ही टाइम और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस स्लाइड, द ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर in India per 100 people, there is a rising trend. And there is a rising trend in broadband users. Then if you are talking about the individual using internet, percentage of population, huge jump, right? Internet use करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा है और especially after COVID, sudden jump, right? और अगर हम लोग ये देखें ये स्लाइड, the mobile cellular subscription rapid increase after 2000, rapid increase because बहुत सारे telecommunication sector के reform हुए थे, if you remember in 2000. Then this introduction of 2G, 3G, so there is a rapid expansion of mobile cellular subscription in India. जो the last 2-3 slides here, it indicates that there is a rapid ICT infrastructure development in India. और अगर ये प्रॉक्सी है मेरे डिजिटलाइजेशन का, then we can say okay, digitalization is happening in very rapid way in India. बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है. अब आते हैं इसके कुछ अदर पर्सपेक्टिव ऑफ डिजिटलाइजेशन. PwC का एक रिपोर्ट है which says that digitalization का जो इम्पैक्ट है वो डेवलप्ड नेशंस में ज्यादा दिखा रहा है in respect of economic growth as compared to developing nations. But employment की जब बात करते हैं तो डेवलपिंग नेशंस में इसका इम्पैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस. क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? रीजंस है, वन इज द रीजन इज लो एडॉप्टेबिलिटी रेट. जो डेवलपिंग नेशंस है वहां पे आईसीटी डेवलपमेंट का जो आईसीटी एडॉप्शन का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है, राइट? और इस स्लोनेस का पीछे और सबसे बड़ा रीजन है इलिटरेसी. दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, दे डोंट नो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट और से और ए मोबाइल फोन, राइट? Second one is the scale effect, right? जब भी adoption होता है टेक्नोलॉजी का, the developed nations is doing in a larger scale, ठीक है? But developing nations में mostly क्या देखा जाता है, we are adopting certain new technology as a trial basis. पहले हम लोग इसको ट्रायल करेंगे certain kind of a population, limited population. अगर हमको लगा that is useful or that is has a usefulness, then we are implementing is a larger scale.
इससे क्या होता है कि देयर इज अ टाइम लैग, ऑलवेज देयर इज अ टाइम लैग इन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। और एक इंपॉर्टेंट जो रीजन है दैट इज द प्रोडक्टिव यूजेस। आपके पास मोबाइल है, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, लाइक अगर इसका प्रोडक्टिव आउटकम हम लोग देखेंगे, देयर विल बी वेरी लेस प्रोडक्टिव आउटकम वी कैन से। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। माइक्रो लेवल की बात करें, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो इज ए मैक्रो, राइट? So productive uses of digitalization is very, very important questions when we are considering the effect on economic growth and development. Now, digitalization can contribute to the increasing income and wealth inequality. Wage difference, income difference, ये दोनों ही बहुत important aspect है जब हम लोग digitalization की बात कर रहे हैं। एक है skill distribution जो हम लोग already discuss कर चुके हैं। Wealth inequality आ सकता है then when there is a rise of capital as compared to labor, right? जब डिजिटाइजेशन होगा, मोस्टली डिजिटलाइजेशन इज प्रोमिनेंटली इफेक्टिंग योर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज, है ना? कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी होता है वो ज्यादा एडॉप्शन करता है डिजिटलाइजेशन। तो उससे क्या हो सकता है कि जो डिमांड फॉर कैपिटल है वो ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू लेबर, और उसके वजह से भी जो रिटर्न्स है, returns on capital and returns on labor, there will be a significant differences capital और लेबर्स के रिटर्न्स पे, और इससे क्या है वेल्थ इनइक्वालिटी हो सकता है। I guess there is a report in Varanasi because me and Amit was there in BHU. Yes. So हम लोग के वहां पे एक बर्निंग टॉपिक था जो बुनकर थे, बुनकर जो मैनुअली बनारसी साड़ी वगैरह बनाते थे। तो आई एम फॉरगेटिंग द रिपोर्ट। So they are saying in recent 10 years there is a disruption of 1.5 lakhs people बुनकर जो पहले उस इंडस्ट्री से लगे हुए थे, वो आज या तो अनएम्प्लॉयमेंट या दे आर शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेसेस फ्रॉम वाराणसी। सो डिजिटाइजेशन क्या ये आउटकम ऑफ डिजिटाइजेशन है या आउटकम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है? वी नीड टू थिंक ऑफ, राइट? हमको इसमें चर्चा करना चाहिए। इन एडिशन, डिजिटाइजेशन लोअर्स द प्राइसेस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। जब डिजिटाइजेशन मास में एडॉप्शन होंगे तो डिजिटल प्रोडक्ट जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इफ आई एम विलिंग टू पे ऑनलाइन थ्रू ए पेमेंट ऐप, आई कैन इजीली एक्सेस जीपे और फोन पे, राइट? बैंक के थ्रू करना है, आई कैन इजीली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग में इजीली, बहुत इजीली कर सकता हूँ। उसी तरह से मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, within half an hour I can get a broker app in my mobile, और उससे मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि थ्रू डिजिटलाइजेशन द प्राइस ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट हैज लेसन लोअर्स एंड लोअर, और ये क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिट किसको करेगा? द रिचर हाउसहोल्ड एज कंपेयर टू द पुअरर हाउसहोल्ड, बिकॉज उनका कमांड डिजिटल प्रोडक्ट पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द poor section of the society, और ये यूरोपियन यूनियन का रिपोर्ट बोलता है। Now, the reduced cost of investing in financial market have led to rise in stock market participation, producing conflicting effect on wealth and inequality. NSE का रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट है, उसने बोला कि इंडियन शेयर मार्केट में जिन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट करता है, 94% इन्वेस्टर आर लूजिंग देयर मनी, राइट? 94% is a big number. They are losing their money. And after COVID, mostly the brokers have published certain report. They are saying there is a huge jump of the users, share market investor, share market trader. But what happened? They are losing money, and it negatively affecting your wealth and income inequality in the society. In positive part, digitalization increase efficiency of information collection, storage and exchange. Information collect करना है, उसको storage करना है या share करना है. In that part, digitalization is tremendously improving the efficiency. Okay. Now, moving to the next slide, e-commerce. हम लोग सब shopping करते हैं, right? Mostly now we are moving from retail shopping to e-commerce shopping. Now, the rise in distributional platform is particularly significant in e-commerce fintech with uncertain overall impact in the competition. Okay, there is a rapid rise of the e-commerce sector in India especially, but overall impact में बहुत
कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ सकता है या बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ही कॉन्सिक्वेंसेस इसका दिखाई बढ़िया दे सकता लेक्चर है. है। The first one is transparency and आपने तो lower search रिसर्च cost. पर्पस से करना चाहिए उसके लिए। फ्लिपकार्ट में जब हम कोई प्रोडक्ट देते हैं, अमेजन में कोई प्रोडक्ट मजा देते आ हैं, रहा तो है। वी हैव फुल ट्रांसपेरेंसी अबाउट द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लोगों ने उसके बारे में क्या रिव्यूज दिया है. That certain extent of transparency is there and it reduces the search cost. अगर बाजार में जाएंगे हम लोग 10 दुकान खोजेंगे कोई एक सामान को, फिर हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं, मे बी हम लोग परचेज करेंगे. बट इसमें एक सर्च कॉस्ट रिलेटेड है, योर टाइम योर मनी, राइट. यू नीड टू गो टू द मार्केट, आपको सर्च करना है, इसमें आपको टाइम लगेगा. तो ई कॉमर्स ने इन दोनों को कम किया, कॉस्ट को कम किया है और ट्रांसपेरेंसी को वृद्धि किया, इंक्रीज किया है. बट however it can create monopoly due to network effect and scale of operation, है ना. ये मोनोपोली को भी क्रिएट कर सकता है. क्यों? क्योंकि इनके पास दो एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू द रिटेल शॉप्स. वन इज द नेटवर्क इफेक्ट. They have a whole bunch of godowns across India. They can deliver that product within 2 to 7 days. आप जहां कहीं भी हो, they have a whole network of godown. They can deliver that product within 2 to 7 days. Scale of operation, they have a very huge scale of operations, राइट. अगर एक अपने लोकल मार्केट का एक दुकान पे जाएंगे तो उसका मोस्टली एक आउटलेट होगा, और बहुत बड़ा दुकान होगा तो 2-3 आउटलेट उसी मार्केट में होंगे. बट फ्लिपकार्ट या अमेजन की बात करें, दे हैव होल बंच ऑफ पीपल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन आई एम टेलिंग अबाउट. तो उनके वजह से उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है एंड मोस्ट एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग वे से आपको वो प्रोडक्ट लेस प्राइस में दे सकता है, राइट. बट इसके वजह से एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है इज अबाउट क्रिएटिंग मोनोपोली. अगर फ्लिपकार्ट ही सारे प्रोडक्ट डिलीवर करने लगे और उसका स्केल इतना बढ़ जाए कि रिटेल शॉप्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, एंड व्हिच इज क्लियरली विजिबल. ये बहुत सारे प्राइमरी सर्वे बोलता है कि ये विजिबल है. पुराने टाइम में जब फेस्टिवल सीजन होता था, होली होता था, दीपावली होता था, तो लोगों की भीड़ लगी रहती थी जो रिटेल दुकान है गांव में, शहर में. आज के डेट में वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है. क्यों? क्योंकि दिवाली के टाइम फ्लिपकार्ट अमेजन बिग बिलियन डेज सेल लाता है, जो आपके प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस में इसमें डिलीवर करता है. तो इट्स अ जनरल टेंडेंसी, राइट. एज ए रैशनल कंज्यूमर मैं क्यों जाऊंगा ज्यादा प्राइस और ज्यादा टाइम कंज्यूम करके दुकान से खरीदने के लिए. सो इट हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट इफ वी आर कंसीडरिंग दिस रिटेल मार्केट एज सच. नाउ और कुछ अदर एस्पेक्ट अगर देखेंगे इन केस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन, द फर्स्ट वन वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इज द डिजिटल डिवाइड. Despite of progression, only 50% populations are in online and 50% in offline. Why? Because still now most people are remaining in the rural areas, right. They have some issue, especially the internet accessibility, and electrification is another issue for them. So a digital divide क्या create कर रहा है? The people who are residing in urban area, who have the more access to electricity, internet, they are getting more benefit out of it, out of digitalization. और जो लोग गांव में है, whether they are facing some issues or they are not able to getting the benefit of digitalization. Second is the privacy concern. Privacy concern is a big challenge for India. आजकल आए दिन there is a lot of scam that happening banking app में, your payment app में, and data privacy is another concern. जब भी हम शॉपिंग करने देते हैं, they are asking for our mobile number, right? कहीं भी शॉपिंग मॉल में चले गए, कहीं दुकान में गए हैं, now it become a business. They will sell those numbers to some agency, and agency will use those numbers to sell to the credit card company or banking. They will make a call, random call to you, sir, whether you need a credit card or not. So these kind of privacy issue is a big challenge for developing countries like India. Cyber security, again, India experienced 9.1 million cyber security incidents in 2022. So it's a big number, cyber security, and people are losing money, and people are losing information also. Their private data has been leaked. So it's a very difficult job for the government in near future to maintain the cyber security as such. Skill gap, as we already talked about, rapid technological and advancement requires skill of the workforce.
but only 42% of the Indian workforce currently progressing digital skills, underscoring the need of digital literacy and upskilling. That's why I'm putting much important about the digital literacy कि आपके पास सब कुछ है, but आपको चलाना आता है कि नहीं, whether you are able to using in a proper way. That matters most when we are talking about economic development or economic growth. But India में वो dividation बहुत है, and especially about the illiteracy. You don't have the literacy, and even you have the literacy, आपके पास आप जानते हो, you are a educated person, but still you don't know how to use those financial services. So that is a challenge for India or Indian government. So financial literacy. So financial literacy covers, it is a broader term that people are using. So it includes the knowledge about the financial product, microfinance, e-banking, card banking, mobile banking, bank guarantee, financial advice, standard rates, similar facilities, and all. But Indian people people mostly residing in the rural area, जो गांव में रहते हैं, उनके पास इन सब की knowledge बहुत ही ज्यादा कम होता है, right? So some people are taking benefit out of it. Okay. एक एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ. आई एम फ्रॉम असम, सो वहां से बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट होता है टू केरला एंड बेंगलुरु साइड, and their wife remaining in that village. Now what happening, they don't know how to withdraw money from the bank, and in generally वो लोग जाना नहीं चाहता, जो फीमेल लोग है वो लोग बैंक में जाना नहीं चाहता. नाउ कुछ लोग इस चीज का फायदा कैसे उठा रहे हैं, उन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को दिया है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा दे दो तो मैं उसको निकाल के उनको दूंगा. Now what cost? They will take a very significant margin of that money. अगर 10,000 rupees आप शेयर कर रहे हो, then I will take 500, I will take 1,000 out of it, क्योंकि मैं बैंक जाके उस पैसे को निकाल के ला रहा हूँ. It means that female is having bank account, female is having mobile phone, female is having internet, but because of that illiteracy or because of this less awareness, other people are taking advantage out of it. So ये सारे experiences that we can observe in Indian economy. Now women have higher level of financial literacy than their male counterpart, और ये empirical research बोलते हैं जो women है वो ज्यादा financially illiterate है because of the male, and reasons are very visible, right? Indian females they are not very inclined to learning about those things is clearly visible for the Indian economy. Now if you are talking about the looking future, तो अगर पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या होगा कि whether digitalization is bad for Indian economy or digitalization is good for Indian economy. It's not about whether it is good or bad. It's about how we are adopting that digitalization and how we are using that digitalization. सवाल इसके ऊपर है, right? क्योंकि digitalization is current day phenomena and we cannot run away from it. हम उससे भाग नहीं सकते कि digitalization से employment लो स्किल में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे. यू कैन नॉट से सो, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एज ए गवर्नमेंट और एज ए पॉलिसी मेकर, व्हाट वी नीड टू डू टू गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ डिजिटलाइजेशन. सो इन जनरली जो एम्पिरिकल रिसर्च हुआ है, जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट एंड रेगुलेशन can enhance economic growth or economic development in more better way when we are adopting digitalization. Government का supportive policy हो, government should aware people, right? Government should take certain kind of workshops, certain kind of awareness program to make people more literate about this digitalization. Then the regulation is a big thing, right? Because if you remember the last budget or so, government of India finance minister said that we are not allowing cryptocurrency in India, right? You cannot do cryptocurrency trading, so you need to download some international broker. And why they are saying so? And most of the government is more concerned about cryptocurrency because it don't have any regulations. Cryptocurrency में कोई regulations नहीं है. So if you are losing money, or your money is going to some other nations, other broker, then it is a headache for Indian government, right? So ऐसे ही अगर digitalization की बात कर रहे हैं, digitalization can work in a both way.
पॉजिटिव वे में भी वर्क कर सकते हैं या नेगेटिव वे में भी वर्क कर सकते हैं. सो प्रॉपर रेगुलेशन अगर हम लोग ला सकते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट, मे बी डिजिटाइजेशन से हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक एग्जांपल जस्ट देके मैं फिनिश करूंगा अपना प्रेजेंटेशन. आई गेस students must know about the DigiLocker in 2015, right? In 2015, the government introduced this, technology or app called DigiLocker, right? Ministry of Electronics and Information Technology launched this DigiLocker. And what is the purpose of DigiLocker? It enables citizens to keep and exchange documents like driving license, आपके academics जो documents हो, diploma, so anything, any documents you can put in the DigiLocker, और आप इसको showcase कर सकते हो. Like you are taking admission in some other institute, from the DigiLocker they can easily get your documents. But the thing is that it's a very good thing, right? हम लोगों का जो documents है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो गया, तो हम लोगों को कैरी नहीं करना है, हर जगह हम लोगों को कैरी करके नहीं जाना है. But the thing is that currently DigiLocker has 152.28 million users and 5.62 billion used documents on board. अगर हम उस इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे, सो like large of the population is not using DigiLocker, right? हम या स्टूडेंट सेगमेंट की बात करें या जो जॉब रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो वो देयर इज अ कंपलसरी दैट ओके समटाइम इट बिकम कंपलसरी टू डू इट, तो हम लोग डिजिलॉकर में सेव करते हैं. बट इट्स अ वेरी good initiative by the government that you can save electronically all your documents in one place and you can produce whenever it required, right? Whenever you require. But the problem is about the digitalization use, the awareness and proper literacy in India. जो डिजिटलाइजेशन के जो बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए था, मे बी उतना बेनिफिट हम लोग एक्वायर नहीं कर पा रहे इंडियन इकोनॉमी एज सच जितना हम लोगों को मिलना चाहिए था. एंड द रीजन इज अवेयरनेस एंड द इलिटरेसी पार्ट ऑफ इट. तो मैं यही पे अमित आई विल फिनिश माय पार्ट हियर. आई थिंक आई एम एबल टू थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन टू आई एम एबल टू गिव इट टू द स्टूडेंट्स. No, Yadav, it was very, I can say, interesting speech, and I can see lots of comments and question from Yeah. YouTube. I would like to put in front of you the two question which I was selected. First Yeah, sure. question from a student Rohit Kumar Soni. He said, "Sir, please tell me, yes, what is the impact of digitalization on capital labor output?" What is the impact or what will be the impact? What will be What the is the impact? impact? What will be the impact? Okay. See, प्रेजेंटेशन में हमने कुछ डिस्कशन किया है कि डिजिटलाइजेशन से कैपिटल ज्यादा बेनिफिटेड होगा एज कंपेयर टू लेबर, एंड लेबर बेनिफिट होगा to a certain extent because there is a huge difference in the skill set of the labor, especially in India. जो लेबर से हाई स्किल है दे विल बी मच बेनिफिटेड फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन, बट जो लो स्किल लेबर्स है दे will be badly affected by the digitalization because they don't have the skill set to use certain kind of app, to use those data, use those information in their day-to-day activity, day-to-day task, day-to-day work. So लोग जो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका इफेक्ट डाइवर्स होगा, राइट? हाई स्किल को बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा, लो स्किल को उतना ही कम मिलेगा. In respect of capital, in generally theoretically or empirically what we can see, हम लोग को क्या दिखता है, capital in generally benefited होता है with the use of digitalization, right? Because capital that people need use as a tool for production process or production scenario, right? और especially the energy part is very crucial. जब कैपिटल की बात करते हैं हम लोग एनर्जी की भी बात जरूर डिस्कस करना चाहिए. सो एनर्जी इनोवेशंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशंस towards the capital productivity is very important. और digitalization क्या किया है, इसको बहुत ही enhance किया है in respect of capital. So I think that diverse should be reduced to get more benefit from digitalization if you are considering the labor market in India. Okay, Yadav, one more question here related to Yeah. your scenario that the gap between
high Hmm. skill labor and low skill labor increasing over the Hmm. period of time. So Right. how can the government cope with this problem? ओके सो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया था स्किल एनहांसमेंट पे राइट that okay we select few of the people from the villages and we give certain kind of skill कुछ स्किल देंगे जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री का कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड माइनर स्किल देंगे then they can survive they can get some opportunity in the market. The problem is with the skill schemes especially that government is showing the data okay we have provided skill to those people but there is no survey which are taking consideration कि उन लोगों का आफ्टर स्किल के बाद क्या हुआ मतलब जो स्किल दिया था उसका आउटपुट क्या है क्या उन्होंने वो कहीं उस स्किल सेट को यूज कर पा रहे हैं अनदर थिंग अगर पा रहे हैं whether they are getting competitive wage or competitive income if you are comparing with the other labors ये दो चीजें हैं जो उस पे कोई सर्वे इंडिया पे नहीं है दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट के साइड से क्या हो सकता है क्या क्या ज्यादा एजुकेशन देने से स्किल सेट बढ़ेगा राइट इन जनरली ये आंसर नो होता है क्यों क्योंकि इंडिया का एजुकेशन आउटकम जो है वो बहुत ही कम है that okay there are so much of literate people educated people but in respect of skill set in respect of outcome of that education is very alarming है ना तो अगर हम लोग खाली एजुकेशन लाइक इट इज ट्रू दैट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड लिटरेसी रेट शुड गो अप बट गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक केयर दैट व्हाट इज द आउटकम ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज द मार्केट डिमांड तो आज इसीलिए हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी डिबेट कर रहे हैं दैट एजुकेशन शुड बी इंडस्ट्री लिंक राइट कि प्रेजेंट मार्केट में मार्केट का डिमांड क्या है कि किस किस टाइप के जॉब्स है ना किस किस टाइप के जॉब्स है किस किस टाइप की स्किल सेट रिक्वायरमेंट है दैट ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एट द कॉलेज लेवल अगर वो नहीं होगा तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन वेयर दे विल गो राइट वो कहां जाएंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से जाएंगे कि आउटकम ऑफ द एजुकेशन शुड बी कंसीडर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट enhancing skill and enhancing that reducing the difference between skills of high skill laborers and the low skill laborers. Okay, Yadav, thank you very much for your speech. और मैं अपने तरफ से और पूरे जो हमारे कॉलेज स्टाफ हैं उनके तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं इसके साथ ही एक क्वेश्चन है जो कि इस वेबिनार से रिलेटेड नहीं है हाउ वाज योर मीटिंग विथ अरविंद पनगड़िया एंड फाइनेंस कमीशन क्या सोच रहा है इस समय अच्छा 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 बहुत ही अच्छा था एक्चुअली मैं गोवा को रिप्रेजेंट कर रहा था वो 16 फाइनेंस कमीशन का वेस्टर्न एक्सपर्ट का मीटिंग था अच्छा तो बेसिकली वो लोग ये जानना चाहते थे जो फंड डिवोल्यूशन हो रहा है स्टेट्स को जो 41% का क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन लाया क्या स्टेट्स आर हैप्पी विद दैट जो फंड उनको मिल रहे हैं कि स्टेट आर हैप्पी विद दैट सेकंड जो इशू था कि जो फंड मिल रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके लिए हम लोग को प्रेजेंट करना था कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है स्टेट फाइनेंस का जैसे मैंने गोवा को रिप्रेजेंट किया गोवा इज ए आउटलेयर फाइनेंस कमीशन के फंड डिवोल्यूशन पे जाएंगे तो उनका जो क्राइटेरिया है जैसे इनकम डिफरेंस हो गया मोर्टेलिटी रेट हो गया टैक्स एफोर्ट हो गया हाँ सॉरी एरिया कर सकते हैं एरिया हाँ तो हाँ फॉरेस्ट इकोलॉजी जो क्राइटेरिया तो सारे में क्या कि गोवा इज आउटलेयर बाकी स्टेट को अगर कंपेयर करेंगे तो गोवा को क्या कि बहुत ही कम रिसीव करता है अगर सारे डिवोल्यूशन क्राइटेरिया को देखा जाए बट क्वेश्चन इज दैट क्या मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है वो सही है या गलत उस पर काफी डिस्कशन हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड रिलीज कर रहा है फाइनेंस कमीशन उसका कैसे यूज हो रहा है और स्पेसिफिकली ऑनलाइन में कहीं इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा हर स्टेट में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन या जो
सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का जो फंड है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे यूज हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस विषय पे बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ, स्पेशली जो फंड डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया है उस पे बहुत सारे डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर हुए। तो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग, मतलब फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग विद दोस टॉप अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड उनका जो सोचने का तरीका है, हम लोगों का जो सोचने का तरीका है, तो इट वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ लर्न किए, बहुत कुछ लर्न किए। अनदर इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रहा है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन तो वर्क कर रहा है, बट स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो बहुत ही लैग चल रहे हैं। सेकंड थिंग, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फाइनेंस की कोई रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहती है। तो एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि जब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आने वाला होता है, क्या हम लोग उससे पहले पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन का कोई रिपोर्ट हम लोग ले सकते हैं क्या, ताकि स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी बनाने में हम लोग को ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो ये सारे डिस्कशन हुए, काफी 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 अच्छा एक्सपीरियंसेस था। थैंक यू पूछने के लिए, दैट आई कैन शेयर कि क्या क्या Okay, okay. एक्सपीरियंसेस। Okay, Yadav. Thank you very much for you. Now you can leave this session. या थैंक यू, थैंक्स टू Okay. ऑल पेशेंटली Okay. Thanks. रहने के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Eh, Live बंद कर दो। बंद करो। यहीं से बंद करो।